અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સાડીની દીકરીની સગાઈના મામલે જમાઈએ સાસુ સાથે બોલાચાલી કરી જીવતી સળગાવી દીધી। સાસુને હોસ્પિટલ લઈ જવાતા તેની હાલત નાજુક છે। પાંડેસરા પોલીસે જમાઈ મનોહર મહાજન સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે। પાંડેસરા શ્રીરામનગરમાં રહેતી 65 વર્ષીય રત્નાબેન સોનવણે સવારે 10:30 વાગે ઘરના ઓટલા પર બેઠા હતા ત્યારે જ મોટા જમાઈ મનોહર મહાજને ત્યાં આવી સાસુ સાથે બોલાચાલી કરી। પછી અચાનક મનોહરે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી કેરોસીન સાસુ પર છાંટી દીધી અને આગ ચાંપી દીધી। ગંભીર રીતે દાઝેલ માતાને દીકરી હોસ્પિટલમાં ખસેડી। પોલીસે જણાવ્યું કે સાડીની દીકરીની સગાઈ બાબતે જમાઈ મનોહરે ત્યાં આવી સાસુ સાથે માથાકૂટ કરી હતી। જમાઈ સાડીની દીકરીની સગાઈ તેના સગા સંબંધીમાં કરાવવા માંગતા હતા જ્યારે પરિવારજનોએ બીજી જગ્યાએ સગાઈ કરી નાખી હતી। शरद माड़ी मेरा नाम है। क्या हुआ है और कहाँ पे हुआ? ये श्री राम नगर की घटना है। वो दादी बाहर बैठी हुई थी वटले पे, तो उनका बड़ा जो दामाद है मनोहर हिम्मत महाजन, वो आए केरोसिन डाल दिया वो दादी के ऊपर और माचिस लगा के भाग गया। क्यों केरोसिन डाला, जलाया उनको, क्या कारण है? वो पहले से ही गुंडागर्दी में है और हमेशा मतलब धमकी देते रहता था पहले से ही कि मैं ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा। अभी वो दादी के पोती की शादी है, तो शादी में अभी उनकी लड़की है, वो अपने हिसाब से करेगी। तो उनका मतलब ये है कि मुझे कुछ पूछना चाहिए था या मुझे कुछ बताना चाहिए था, लेकिन इनकी लड़की है, ये लड़की की माँ है, इन्होंने अपनी मर्जी से उनकी लड़की की शादी फिक्स की है, वो अपने हिसाब से करेगी। वो पहले से गुंडागर्दी में उनको पूछ के कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो कोई भी अपना कार्यक्रम हो उसमें हमेशा दारू पी के झगड़ा लफड़ा करते हैं, चाकू तलवार लेके घूमते हैं, वैसे हमेशा करते रहते हैं। मतलब कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, सब में वैसे ही काम करते रहते हैं। कौन से एरिया में जलाया है? ये श्री राम नगर का पांडेसरा में आता है। इसके पहले कोई धमकी होगी? इसके पहले कोई धमकी? इनसे पहले भी एक बार धमकी दी थी कि अगर शादी में मैं आऊँगा तो लड़की की माँ को भी, लड़की की दादी को भी और लड़की की मौसी को भी, तीनों को जिंदा जला दूंगा, ऐसी इनने धमकी दी थी। અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક મહત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।